What's up, guys? It's me again. Today I have something very special, something that's been requested on the channel. It's Kurukshetra. Now I don't really know I haven't even watched the trailer for this, guys. I just know that there's like freaking 18 episodes or something. I'm very familiar with the Mahabharata. It's honestly the story that got me into like Hinduism and Indian history. That was my entry point. I did a bit of reading. I actually have the Bhagavad Gita in my house. I've got like a big copy that also has like photos. Ooh, my camera is moving. And I've got a small copy of the Bhagavad Gita. So yeah, I've mentioned on previous videos how I'm going through it. You know, I'm taking my time. I'm finding the book as different phases of my life, right? But still, anyways, that has nothing to do with anything. Today we're talking about the Kurukshetra. So I'm also very curious to see how this TV show portrays the Bhagavad Gita. Actually, I'm actually curious about so many things, bro. Like we're gonna see the scene where Krishna raises the wheel up against Lord Bhishma, right? Yo, bruh. So many cool moments. But bro, guys, I know this intro is super long, but I have a hot take on who my favorite character is in the Mahabharata. Some of you are not gonna like it, but we'll get to it. I won't even say it this episode. But if I see my goat in this episode, you'll know, bro. Yo, there's so much, bro. I guess they're not. Are they gonna show like the band of his exile? Yo, there's just so much. I have no idea where they're gonna start this show, and I'm so excited. And it's gonna be 18 episodes. Well, are they just gonna get straight to the war, bro? No, but then that means they start with the Bhagavad Gita. Ay. Guys, I'm hyped. I'm sorry for the super long intro. But yeah, the only Mahabharata that I've seen is the 1980s one. I watched it on YouTube, bro. Like, there's like freaking 135 episodes. I watched like all of it, bro. So yeah, I'm keen to see a different adaptation. I know SS Rajamouli wants to do another one. That's his dream project. Anyways, this will have to tide us over. Let's see. And I also watched, I think there was a 2015 Kurukshetra movie. I think there was a 2015 Kurukshetra movie. I also watched that years ago, but Anyways, I'm excited. Let's go. This is kind of like 1980s. और इतिहास के उस पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। Guys, this animation is not bad. कुरुक्षेत्र में ये युद्ध है दो परिवारों का जिनके पूर्वज एक ही थे। 5 पांडु थे और 100 कौरव और पांडुओं के साथ उनका परिवार और कृष्ण थे। The goat. धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ बिछाई। Yes, and then the disrobing of Draupadi. सब हार गए तो पांचाली को दांव पर लगा दिया जो 5 पांडवों की पत्नी थी और जब टूटे तो द्रौपदी की चूड़ों की तरह पूरे कुरुक्षेत्र में बिखर गए। हम आज भी धर्म कर्म के उसी युद्ध में जी रहे हैं। हमारे पांव कुरुक्षेत्र से निकले नहीं। This is true. Woo, dog, this is so epic. What the hell? Yo, guys. That's it. That's it. That's what I want to see, bro. Woo! यही तो है जहां से इतिहास के उस भयानक अंत की शुरुआत हुई। Okay, so
Okay, so we're not starting at the beginning of the war. Nice. Nice. We get to see the setup. Well, at least a little bit of it. Because the setup is more like 100 years from like Lord Bisham's birth, right? Damn. Hey, this guy got riz. बाहर पुष्प लाल, भीतर हृदय लाल, और हाथ में प्रेम की ये अंगूठी लाल। हर्ष से लाल अभिमन्यु को क्या पता कि लाल तो वो युद्ध भूमि भी थी जो उसी के रक्त में रंगने वाली थी। Yep. अभी और कितने पुत्रों का शोक शेष है इस गांधारी के दुर्भाग्य में। Yep. ये क्या हो गया पुत्र? वो यहाँ शवों के बीच निर्जीव पड़े हैं। This animation is क्योंकि उस दिन एक नहीं दो विवाह See, संपन्न this हो is रहे not थे। good for newcomers. एक अभिमन्यु You और have to know the उत्तरा का, story और दूसरा to कुरुवंश और उस महायुद्ध appreciate का this. जिसने समस्त भारत को Panda! भारत बना दिया। गांधारी की आंखों पर यदि पट्टी नहीं होती तो वो उस दिन एक नहीं दो सूर्यों को देखती, एक जो आकाश में जग रहा था और दूसरा जो धरा पर जल रहा था। That's poetry. असंख्य वीरों की चिताओं का सूर्य। That's poetry. युद्ध की उस अग्नि ने कुरुक्षेत्र। I love it that like the character models look painted. That's my goat. That's everyone's goat. That's the universe's goat right there. Vasudev. न्याय के पालक, सत्य के संरक्षक, Aura, bro. Did you just see that? युधिष्ठिर। असीम बलशाली, महाकाय, महारथी, गदाधारी भीम। Guys, look at this. Look at this introduction, bro. सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, Arjun! अजय, Woo! गांडीवधारी अर्जुन। 50%, one half of the Bhagavad Gita. माद्री पुत्र नकुल और सहदेव। The twins. इनका परिचय इतना ही बहुत है। Come on, give them some oral too, bro. Did you see, bro, the detail in the eyes, bro? देव सुंदरी पांचाली द्रौपदी। Yo, guys, this animation is out of this world, bro. अब मुंह नहीं हाथ चलाने का मन है। मैं तो कहता हूं कि धैर्य भैया भीम, धैर्य। लो आ गया प्रिय अभिमन्यु। प्रणाम पिताश्री। समय तो जैसे कांटों के रथ पे सवार आंधी की तरह हमारी ओर बढ़ रहा है। हाँ? पांडवों और कौरवों का ध्वज एक साथ? इस दृश्य को याद कर ले पुरोहित। पता नहीं इसके बाद कब ये दोनों साथ हों। तो क्या शांति केवल पांडवों का दायित्व है, कौरवों का नहीं? और हमने मांगा ही क्या है? मात्र 5 गांव। मांगना कैसा अर्जुन, बल्कि पूरा इंद्रप्रस्थ ही हमारा है। कौरव अपने वचन से मुकर गए, हम नहीं। धीरज रखो अनुजो। कौरव नहीं तो पुरोहित जी से तो शुभ समाचार की आशा रखो। Yudhishthir. Sometimes I'm like, Yudhishthir shouldn't speak. Because this all happened because of him. मेरी कहो, मैं कौन हूं? ये कैसा प्रश्न हुआ? महर्षि व्यास के शिष्य, महाराज धृतराष्ट्र के प्रिय, सारथी गांव लग्न के पुत्र और कौरव के राजनायक दूत संजय। इतने बड़े परिचय वाला किसी का छोटा सा दूत संजय। मेरे तो शब्द भी महाराज धृतराष्ट्र के हैं। Trust.
मेरे प्रिय पांडवों को समझाओ कि युद्ध से उन्हें क्या प्राप्त होगा। उन्हें याद दिलाओ कि इस युद्ध में तो दोनों पक्ष भी मेरे अपने हैं। विजय किसी की भी हो, पराजय मेरी ही होगी। यदि हम पांडवों की साधारण सी मांग मान लेते तो। बस करो संजय, इस विषय पर अब और विमर्श नहीं होगा। There he पुरोहित is, को लो, bro. तत्काल मत्स्यराज जाओ और कह दो उन पांचों पांडवों से top कि dog. हस्तिनापुर ने अपना निर्णय ले Top लिया। goat of. क्या उनकी मांग उचित नहीं, या हस्तिनापुर को इसके परिणाम का अनुमान नहीं? और यदि परिणाम जानते हुए भी कौरवों ने मना कर दिया तो? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है, युद्ध। डाकू! R.I.P. Ow. भूमि लहू मांग रही है संजय। रक्त की पहली बूंद बह चुकी है। सभा स्थगित करते हैं केशव। समस्त कुरु वंश का सूर्य अस्त होने को है। I like the poetry that they're putting into. और आप दोनों? मैं जब तक हस्तिनापुर का उत्तर नहीं जान लूंगा, विश्राम And नहीं। Duryodhana is just so stubborn, bro. Like, you can't. नींद तो आपको भी नहीं आएगी माधव। इन्हें तुरंत राजवैद्य के पास ले जाओ, तुरंत। आइए, आपको अतिथि कक्ष में ले चलता हूं। महाराज युधिष्ठिर से भेंट हो जाती तो अच्छा होता। महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव तो अभी विश्राम कर रहे हैं। दर्शन और आशीर्वाद तो मुझे चाहिए आपके केशव। आइए संजय, स्थान ग्रहण कीजिए। केवल स्थान नहीं, कुछ फल भी ग्रहण करो। लो, चिंता न करें संजय, संदेश तुम्हारा जैसा भी हो, फल ये मीठे ही हैं। मैंने स्वयं चुने हैं। तो कैसे बोलूं? कुछ मत कहो संजय, तुम्हारी निशब्दता बोल रही है। कौरवों का एक और अर्थहीन प्रस्ताव। अपने धनुष की डोरी कस लो पार्थ, और बाणों की धार तेज कर लो। इन्हें चलाने का समय अब समीप है। जाओ कह दो संजय कि हस्तिनापुर का उत्तर हमें मिल गया है। We accept. उत्तर तो हस्तिनापुर रणभूमि में देगा, और ऐसा उत्तर कि प्रश्न कम पड़ जाएंगे। काश यहाँ से So, इन्हीं give के Duryodhana अनुज a पांडु build, a हड़प crazy build, bro. और फिर मन भर गया तो I क्या also किया? like when they make ये वो Duryodhana handsome. धृतराष्ट्र हैं, Like, जो wait, जन्म से handsome bad अंधे guys are होने cool, के bro. बाद भी कर्तव्य से कभी डिगे नहीं। ये वो धृतराष्ट्र हैं जिनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अर्थात मैं इस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है। हस्तिनापुर की भूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है, और पांडवों को इसका एक अंश भी चाहिए तो लड़कर लेना होगा। भिक्षा में कुछ नहीं मिलेगा। Bro, this is the most important story न्याय छोड़ो, in the world, bro. क्या उन्हें हमारे संबंधों का भी ध्यान नहीं? तो क्या पितामह भीष्म भी उन्हें नहीं समझाते? Woo! And they made him look handsome too, bro. सामर्थ्य लिए वचनबद्ध। What is Lord Bishop's अपनी original जीवित name, रहते bro? तुम पर आंच ना Forgot आने his दूंगा, original name. किंतु चोट मैं पांडवों को भी ना पहुंचाऊंगा, क्योंकि पांडव भी मेरे उतने ही अपने हैं जितने तुम। मैं अपने ही वंश पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। वंश क्या होता है मुझसे पूछिए पितामह। मैं अंगराज कर्ण, अंगराज! वंश के कारण मुझे श्राप मिला कि अपने अंतिम पलों में मैं युद्ध विद्या भूल जाऊंगा, किंतु फिर भी युद्ध के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। आपकी तरह आधी निष्ठा वाला योद्धा नहीं। युद्ध भूमि में मैं आपके नेतृत्व में कभी युद्ध नहीं करूंगा पितामह। तुम्हारे मैं ही हूं जो इनके प्रिय अर्जुन का शीश तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा। मृत्यु का मुझे भय नहीं, कौरवों की हट का उत्तर तो देना ही होगा। He's saying this now, शांति but he's के still लिए gonna हमें go in अपने freeze, bro. व्यक्तिगत क्रोध का मोल भी चुकाना पड़े। विजय श्री का आशीर्वाद लेने आया हूं पिताश्री।
जिस युद्ध को लेकर तुम इतने व्याकुल हो, उसका मूल्य भी जानते हो दुर्योधन? No, he doesn't. गांधारी, समझाओ अपने पुत्रों को। Full of pride. सिंहासन के लिए इनकी भूख देखकर मुझे तो लगता है कि ये मुझसे अधिक आपके पुत्र हैं महाराज। इनका सबको विचार है, किंतु मेरे इन 5 पतियों में से किसी एक को भी मेरे खुले केशों का कारण याद है? मैं याद दिलाती हूं। इन्हें उस अधर्मी दुशासन ने भरी सभा में छुआ है। कौरवों की भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया है। द्रौपदी का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। Yeah. And she deserves justice, bro. तो निश्चित हुआ, पितामह भीष्म सेना का नेतृत्व संभालेंगे। नेतृत्व अवश्य संभालूंगा, किंतु हृदय में उत्साह न होगा। इस क्षण का आनंद लो भांजे। I forgot his. सोचो कैसे नपुंसक होते I हैं forgot वो राजा Duryodhan's जो uncle's अपनी name, bro. पत्नी को खेल की एक वस्तु बना दे। छी छी छी। Forgot his name. जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। But he also meets his justice. पांडवों ने तुम्हारे आंसू भी देखे हैं और अपमान भी। Yo, how are they gonna do कि इतने अपमान और Dhritarashtra's like divine vision, bro? Yo, so many cool things to come, bro. इतने शांति प्रयासों के बाद भी कौरवों को यदि विनाश ही प्रिय है, तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। कौरव और पांडव एक ही बीज के 2 वृक्ष, जो एक हस्तिनापुर के लिए एक साथ नहीं खड़े हो सके। और धर्म अधर्म जैसे भव्य आदर्शों की भेंट चढ़ गए। लेकिन इन 18 दिनों में मैंने सिर्फ युद्ध नहीं देखा, मैंने देखे 18 युद्ध और उनके साहस की 18 कहानियां, और हर कहानी के पीछे छिपे वो 18 कारण, जिन्होंने शांति के हर प्रयास के बाद भी कुरुवंश के भाग्य में थोप दिया इस महायुद्ध का। Guys, I think this is a very good beginning. I'm a bit not sure about jumping between different time periods. I think for this story, I prefer it told in chronological order. I understand you want to build up drama and build up tension. And I understand that we all know how this story goes, guys. This is a tale as old as time itself. But you know, I like, for example, showing Abhimanyu's death at this stage. Like, I feel like when we get to that moment, it's gonna lose a bit of its drama, you know. Like, I would have loved if we saw like lots of Abhimanyu, and you know, even though it's like you know, when you watch a prequel and you know that this character is not gonna make it, you know, at least you still have that bad feeling. You're like, ish, I wish he could live forever. See, I feel like they removed a little bit of the tension later on by already showing us like some scenes from the battlefield. This is just my personal preference for how I generally like stories to be told. But otherwise, I love the animation. I love the character models, quality, like they look painted kind of. And you see Draupadi's eye, like you can see the blood, like the blood vessels in her eyeball. Like that was a crazy detail of animation. I think it's a very exciting show. I think the battle sequences are gonna be sick. Yeah, I just hope we don't lose the drama and also the melodrama.
You know, like to me this is like a tragedy. The Mahabharata is a tragedy. Kurukshetra especially is like the most tragic part of it all. And you know, I'm still I'm excited, but I'm still like I didn't feel like, you know, I felt my emotions, my excitement go up, but only when I saw characters because I know them, right? But like they didn't show us like Lord Bisham, like really like make a strong impression. And Lord Bisham is like, you could very much argue that Lord Bisham is like the main character of the entire Mahabharata. You could make that argument. So showing so little of him, you know, but we did see Dhritarashtra, we did see Duryodhan really have a big, strong moment. And we saw the Pandavas. You know, Lord Krishna, Vasudev, he did give everybody like a crazy intro. Yeah, guys, I think this has potential. I just need, you know, I need that. I don't know. Let's just see how it goes. But yeah, guys, thank you for the recommendations. Thank you for the suggestions. Yeah, dude. And there was a point. Listen. I think it was at some point when Team Pandav was talking, and when I said this is the greatest story ever told or something, I could sort of feel like, oh my god, I'm seeing the Mahabharata. Like, the Pandavas just seemed like they were, it was them. Like, it was like, it's like the end of the world. Because when the Kurukshetra was about to happen, bro, it's literally like it's the end of the world, bro. And I was like, okay, wait. I'm starting to feel it. But then, you know, it kind of went down. So I'm just, let's give this time, okay? It's only 30-minute episodes. Also, I've seen this story already, played by humans. So, you know, let's take it as it goes. Let's take it as it goes, guys. Because I know I wanna see. There's just also, this is also a point in the story before the crap hits the fan. I don't want to swear in like the Mahabharata context, bro. But this is like it's before the crap hits the fan. So when we get to the Gita, when we get to those moments, I trust them. I trust these creators. I trust them to pull off the important sequences. I trust them. This the point we are in the story is, and also they got the poetry. When it said when Gandhari, if she could see, she would see that there were two suns setting. So there's some poetry here, guys. There's some poetry here, guys. So you know what? Let me just and watch. Guys, I've said too much. I've said enough. Thank you so much. I also really want to see like a flashback to their childhoods. I really want to see a flashback to their childhoods. Or a flashback to just the past. Just to those other moments that I love in the map, that we all love in the Mahabharata. Guys, thank you. I've been trying to end this video for so long. I'm going to end it now. Thank you so much. I look forward to watching the rest of the show. Bye!